Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we will start with the chapter Fraction, chapter number 8 of your mathematics textbook, Fractions. Now, in this chapter, we will learn about the definition of fraction, then how we can represent the fractions, then we will learn about types of fraction, that is your like fraction, unlike fraction, unit fraction, equivalent fraction, and also we will go for our addition and subtraction of fractions. So in this chapter, first we will start with the definition of fraction and how we write the fraction. So let us see. Now let us take an example where I have drawn a picture of pizza. मैंने एक पिज़्ज़ा का पिक्चर बना लिया है, आप देख पा रहे हो। अब क्या करूँगी मैं, इन पिज़्ज़ा को मुझे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि what happens when you have pizza, you always share with your friends or your family members, isn't it? So as you have to share with your friends and family members, then what you do, you have to take out the parts of pizza, or you have to cut the pizza into equal parts so that you can give it to your friends and family members. Okay, so let me just divide the pizza into the 4 equal parts. Now you have seen that I have divided the whole pizza into 4 equal parts. Now you can see here, first part, second part, third part and fourth part. Okay, so this full pizza is your whole or whole thing or whole number, whatever. Okay, whole means full. Okay, whole means full, and these parts is 1 2 3 4. These are the part of this whole thing. Okay, now if I take out one part from this pizza, now see, from here I have taken one part. Okay, now this part will be considered as the fraction. तो ये जो पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया है एज एन इक्वल पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, दिस इज कॉल्ड एज द fractional part. Okay, so now this whole thing, out of that we have taken one part, so we have to write 1/4. So this part is 1/4 part of this whole pizza. And why we have written 4? यहाँ पर 4 हमारा क्यों आया है? क्योंकि देखिए हमने इस पूरे पिज़्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट्स में, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है। ठीक है, तो मैं और एक एग्जांपल आपको देती हूँ, और उसके पहले हम देख लेंगे कि ये पार्ट को हम क्या कहेंगे। अभी कितने पार्ट्स है, देखिए यहाँ पर 3 रिमेनिंग पार्ट्स है। सो आउट ऑफ 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर रिमेनिंग, दैट इज वाई दिस होल थिंग बिकम्स 3/4 and this one part becomes 1/4. So the other example is, now see another figure I have taken. Now you can see the whole figure is having how many parts? 1 2, let me write in numbers, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो ये पूरे देखिए ये फिगर में कितने पार्ट्स हैं? 6 इक्वल पार्ट्स है, एंड दिस पार्ट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा पार्ट जो है उसे हमको इक्वल करना है। ठीक है, तो लेट मी डू इट।
So all these parts are considered to be equal parts. तो ये हमने देखे यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं. नाउ दिस पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, 1/6 पार्ट. ओके, तो ये जो पार्ट हमारे पास है इसको हम बोलेंगे 1/6 पार्ट, मतलब 6 पूरे पार्ट्स में से एक पार्ट है. देन इफ वी टेक दिस 2, ये और ये, तो दिस बिकम्स योर 2/6 parts. Okay, because we have taken 2 equal parts from the whole 6 parts. Okay, now if we shade this, then it will become 3/6. If we shade this full 4 parts, then this becomes 4/6. If we shade, you can see 5 parts are shaded, so this becomes your 5/6. So out of total 6 parts, the 5 parts are shaded. So these are the parts which are shaded. That is why we have written 5/6, and this becomes your fraction. Okay, fraction means your part. Okay, and this is your whole thing. So fraction and whole मतलब क्या हो गया, full thing, and fraction means part. Okay, so you can easily have the concept कि कोई भी चीज़ है जो whole thing है उसमें से हमने कुछ निकाल लिए तो that becomes your fraction. Suppose you are having a chapati, it is round in shape. So as you have taken half of chapati, so that becomes your 1/2, because 2 parts are there, and here out of that you have taken 1 part, so that becomes your 1/2 part. Okay, half part. So this is the concept of your fraction. So the can be written as number of parts selected upon total number of equal parts of the whole. So this is how you have to write about your fraction. So fraction is number of parts selected of the whole and total number of equal parts of the whole. So I have already given you the example. So from this you can easily take the fraction numbers. So हम जब ऐसे 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, these all are your whole numbers. Okay, these all are your whole numbers, and when we write half or 1/3, 1/4, 2/5, these all are your fractional number. Okay, these are all fractions. So fractions are always written in this way. Okay, so the upper number, जो ऊपर के साइड नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर. Okay, so numerator is the upper part of the fraction and denominator is the lower part of the fraction. Okay, so as we are writing this number like this fraction, so upper one, that is 1, is your numerator and 2 is your denominator. Okay, so this way we need to write the fraction. So fraction will always have a numerator and a denominator. So ये जो नाम है ये आप याद रखिए. Now as we move to exercise 8.1, here you have the picture, isn't it? Now here you can see the pizza. Here what a fraction part is coming out, isn't it? Write W for whole and F for fraction. So this becomes your fraction. So write down F. Here no part has been taken out, so this is your whole. This is your whole ice cream. This apple has been parted off, so it is a fraction. This is whole, and here also you can see the fractional part coming out, so this is also a fraction. Okay, so like this you need to write.
Now write the numerator and denominator of the following fraction. So here numerator is 3. See, numerator is 3. Numerator 3 and denominator is 5. Okay. Now here numerator is 4, denominator is 7. Numerator is 0, denominator is 8. Numerator is 2 and denominator is 9, and here numerator is 6 and denominator is 11. Now you need to write the fraction in words. So this will be 1/6. Okay, this will be 2/5. So 2/5, then 7/10, then 8/9. Okay, so this way you need to write 2/5, 7/10, 8/9. Now represent the following fraction in numbers. 1/3. So write 1, then 3. So 1/3. 3/8. 3/8. Then 5/9. And then 7/11. ओके तो यहाँ पर देखिए ये 9th का स्पेलिंग में NINTH होगा. हाँ, NINTHS. So this is how you need to write the fraction in numbers. So these are the word and these are the fractions. So this is very easy, isn't it? Now some common fraction that are usually we use is half. So half, तो you easily know that when a whole part is divided into two, जब एक whole thing दो parts में divide करते हैं उसे, so one part is your half. Okay, 1/2. So how many total parts? 2 parts are there, and out of 1 is 1/2. So this is called as half. Then your second most commonly used fraction is 1/3. So when the whole thing is divided into 3, तो एक बड़ा सा जो भी पिज़्ज़ा हो या चपाती हो, हमने उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तब हमें उसे 3 पार्ट्स कहते हैं. और आउट ऑफ दैट 1 पार्ट इज नोन एज 1/3 पार्ट. Okay, and when we are dividing a whole thing into 4 equal parts, that time each part is known as 1/4. So these are the common fractions what we are using. Okay, now 3/4. 3/4 means when out of this whole thing we have divided into 4 equal parts, and when we take out 3 equal parts out of that, so that becomes your 3/4. तो ये मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बताया था. So here one activity is given to you. So if you take a square paper with you, then if you fold it into half, that becomes your half. When you fold the paper into 3 equal parts, that gives you one part will give you 1/3 part. And if you fold the paper into 4 parts, then that will give you 1/4 part, and 2/4 part, 3/4 part. So you can see here, यहाँ पे एक part जो shaded है, that means 1/4 equal parts. Here 2 parts are shaded, that is why 2/4, and here 3 parts are shaded, that is why 3/4. So I have already shown you this diagram. Okay, so these are the parts, and this is how you need to write the fraction. Now let us come to exercise 8.2, where you have been given with the match the following. So you have to match it with column A and B. So 1/3, that is 1/1/3. So let us match it. 3/4, 3/4. Now 1/2, half, and 1/4, 1/4.
Okay, so this is how we have to match it. Now write the fraction for the colored part. You have to write the fraction. तो यहाँ पे देखिए how many equal parts are there? There are 4 equal parts. And how many are shaded? So you need to write 2/4. Because here it is said write the fraction for colored part. Okay, 2/4. Here how many parts total? 1 2 3 4 5 parts are there, and in that 3 parts are shaded or colored, so it becomes 3/4. Here also 1 2 3 4 parts. Out of that 3 parts are colored, so this becomes 3/4. Here 1 2 3 4, again 4 equal parts are there, and out of that 2 are colored, so this becomes 2/4. Now again for this figure, how many equal parts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 parts are there. Now out of that 1 part is colored, so 1/8. Here also 1 2 3 4 5 6 7 8 parts. Then 3 parts are colored, so it becomes 3/8. Here 1 2 3 4 5 parts are there, and 2 are colored, so 2/5. Then here 1 2 3 4 5 6, so 1/6. Okay, so we have taken the numerator as the colored part, and the denominator is the total equal parts. Now color the figure to show the given fractions. Now you have 3 parts out of 4, so that means you need to color 3. ये 3 पार्ट को आपको कलर करने पड़ेंगे. So this becomes your 3/4. Here 5 parts you have to color, 5/8. So 1, this 4 part, and this one is 5. So this becomes 5/8. 5 पार्ट को आपको करना है. यहाँ पर 2 पार्ट को आपको कलर करना है. So let us color 2 parts out of 5. Here only 1 part you have to color, and here 3. So let us color 3 parts. So you can see 3 parts I have colored, and now half part you have colored. You have to color half. Now see, half we have colored. Now next one is color 1 part of each figure red, blue or orange to show half, 1/3 or 1/4 respectively. Color 1 part of each figure red, blue or orange. So you have to take 3 colors here, and you have to show 1/2, 1/3 or 1/4 respectively. Now take your red color. Now you can see 1/2 means the figures. जो फिगर में आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है, तो इसको हमें हाफ, वो हाफ होता है, तो हम रेड कलर से यहाँ पर आपको रेड कलर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर है इसमें आपके 4 पार्ट्स है. तो 4 पार्ट मतलब देखिए यहाँ पे है 1/4, तो ये आपने ऑरेंज कलर लेना है, और इसमें आपको 1 पार्ट में ऑरेंज कलर करना है. दिस इज ऑरेंज कलर. ओके, नाउ हियर ऑल्सो यू हैव 3 पार्ट्स, 1 2 3, सो दैट मीन्स 1/3. दैट यू नीड योर ब्लू कलर. सो यहाँ पर एक ब्लू कलर से आपने कलर करने हैं एक पार्ट में. फिर यहाँ पर आपका देखिए 4 पार्ट है, दैट मीन्स 1/4. दैट मीन्स यू नीड टू टेक ऑरेंज कलर. सो इसमें आप एक ऑरेंज कलर में 1 पार्ट को आपको कलर करने हैं. फिर यहाँ पर देखिए टोटल 3 पार्ट्स है, दैट मीन्स 1/3. यू नीड ब्लू कलर. सो जस्ट गो फॉर ब्लू कलर, और 1 पार्ट को अपने कलर करने हैं. और यहाँ पर देखिए 2 पार्ट ही है, दैट मीन्स हाफ. यू नीड टू टेक रेड कलर एंड मार्क इट शेड 1 पार्ट. ओके, तो मैंने देखिए यहाँ पे कलर लिख दिए हैं, आपको इस कलर के हिसाब से आपको कलर करना है. फिर देखिए राइट फ्रैक्शन फॉर द पार्ट्स कलर्ड डार्क एंड लाइट.
सो यहाँ पर डार्क कलर एक दिखाई दे रहा है और लाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो डार्क कलर का फ्रैक्शन क्या होगा? डार्क कलर का देखिए एक 1/3, सो टोटल 3 parts are there, that is why we have to write 1/3. For light you need to write 2/3. देखिए 2 पार्ट में आपके लाइट कलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए out of 2 parts 1 is dark color, here also out of 2 parts 1 is light, so both the fractions are same. Now dark color, so let us first count how many total parts are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so total 9 parts है। दोनों में आप 9 लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए डार्क कलर कितने हैं? डार्क कलर 1 2 3 4 5 6 are dark color and 3 are light color. Okay, now let us move to the next figure where you have total 4 parts. देखिए 4 parts है, तो out of that 1 part is dark and 3 parts are light. So this is how you have to write the fraction. Now again the same thing we need to go for exercise 8.3. Here you can see the figures given to you and you have to see the colored figures. So first is you have out of 3 figures 2 are colored, so 2/3. Now how many total figures are there? 4, so write that 4. And how many are colored? 1, so 1/4 is your fraction. Now in this you have total 3 figures and 1 is colored, that is why 1/3. And here you have 2 figures and 1 is colored, so 1/2. Here also you have 4 figures, out of that 2 are colored, that is why 2/4. And here also you have 4 figures, out of that 3 are colored, so 3/4. Now the second question, यहाँ पे जो second question दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है? आपने ड्रॉ एंड कलर पिक्चर ऑफ योर चॉइस टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन इन ए कलेक्शन। तो आपने यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? 3 फिगर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/4 मीन्स टोटल आपके 4 फिगर्स है, तो जस्ट ड्रॉ 4 बॉल्स। ठीक है, 4 बॉल्स बनाइए और उसमें से 3 को आपको क्या करना है? कलर करना है। तो आपके कितने हो गए? 3/4। अब यहाँ पर फिर से आपको टोटल कितने बॉल्स हैं? 4 बॉल्स आपने बनाने हैं और उसमें से 1 कलर करना है। सो यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ फिगर, है ना। फिर यहाँ पे हाफ 1/2, दैट मीन्स 2 बॉल्स यू नीड टू ड्रॉ। आउट ऑफ दैट 1 ball has to be colored. Okay, now 3 balls total, out of that 1 ball is colored, so this becomes your 1/3. तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फिगर्स है, आपको बॉल बनाने हैं, आप बॉल बना सकते हैं, आपको ट्रायंगल बनाना है, आपको फ्लावर बनाना है, वॉट एवर फिगर यू वॉन्ट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ, बट द कलरिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू योर न्यूमरेटर। ऊपर जो नंबर है उसके हिसाब से आपने कलर करना है, और जो फिगर आप बनाएंगे वो आपके डिनोमिनेटर को देखकर आप बनाओगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, इसीलिए हमने 4 फिगर बनाए हैं और 3 को कलर किया है। यहाँ पर भी 4 है डिनोमिनेटर, इसमें टोटल हमने 4 बनाए हैं। यहाँ पर टोटल कितने? 2 है, इसलिए 2 बनाए हैं। यहाँ पर टोटल 3 है, इसलिए 3 बॉल्स बनाए। एंड ऊपर वाला जो भी नंबर है वो नंबर को देखकर आपको क्या करना है? कलर करना है। So with this we complete off with exercise 8.3. Now we will study about types of fraction. Types of fractions are like fraction and unlike fraction. So what is like fraction? So आप like fraction में देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो fraction आपने को दिया गया है 1/8, 2/8, 5/8, 7/8. So हर एक fraction में you can see the denominators are same 8. सब में देखिए denominators क्या है? सेम है, 8 है। So that is why they are called as like fraction. Now if you look to this fraction, यहाँ पर ये जो fractions आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। यहाँ पर देखिए हर एक डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज
unlike fraction. So this happens when we compare. आप जब दो या तीन fractions को compare करते हैं, that time only you can say whether the fractions are like fractions or unlike fractions. Now you have third type of fraction which is called as unit fraction. Unit fraction में आप देखिए यहाँ पर 1/1, 1/2, 1/3, 1/9, 1/17. तो यहाँ पे जो आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सबके सेम है एंड वो विच इज़ 1. न्यूमरेटर जो है वो क्या है, सेम है एंड द नंबर इज 1. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन शुड हैव द न्यूमरेटर 1. Okay, so if 1 is there, that means that fraction is a unit fraction. Then next type of fraction is equivalent fraction. Equivalent fractions that have the same value are called as equivalent fraction. Okay, so now let us see. यहाँ पर देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. So now these numbers are there. So you can see that all the numbers are different, isn't it? But how it is called as equivalent fraction we will just see. तो यहाँ पर देखिए 1/2 है. अब आप ये 2/4 को ले लीजिए. देखिए 2/4 को मैंने ले लिया. अब 2/4 को क्या होता है, देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So this becomes 1/2. Okay. Now if you take 3/6, अब 3/6 को ले लीजिए. 3/6 क्या होता है, फिर से देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. Again this gives you half. Okay. Now go for next number 4/8. So 4/8 को भी हम कैंसिल करेंगे तो what we are getting is half. So now you can see first number was half. When we cancel this number, this also becomes half. This also becomes half and this also become half. So all these numbers gives the answer as half, 1/2. That is why they are called equal fraction, because they give you equal values. So हर एक fraction का value क्या आता है, half आता है. That is why they are called as equivalent fraction. Now you have been given here with a diagram where you can easily see how you can say these fractions are equivalent fractions. तो अभी देखिए यहाँ पे this paper, ये जो पेपर है इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए थे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2. Now here what happens, here how many parts, total 4 parts were there and out of that 2 were colored parts, so we have written 2/4. Now if you look to this diagram, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, लग रहा है ना ये हाफ हो गया है ना, तो इसीलिए ये देखिए इसके जैसे ही हो रहा है. ठीक है. नाउ इफ़ यू लुक टू दिस डायग्राम, यहाँ भी आप देखिए इसको यदि आपने उल्टा कर दिया तो देखिए, तो ये भी आपने देख सकते हैं ये भी हाफ हो गया 3/6, बिकॉज 3 parts are colored and out of 6 parts 3 are colored. Now if you look here, यहाँ भी देखिए 8 parts, out of that 4 parts are colored, so it is also looking half. तो ये देखिए हर एक फिगर आपको ऐसा लग रहा है कि the half part of the figure is colored. Okay, so this is your visual idea, means how you can see with your eyes that this shows that the parts are, the fractions are equal, isn't it? So this also gives you half, this also gives half of the figure is colored, half of the figure is colored, half of the figure is colored. So in each and every figure half part is colored. That is why they are said as equivalent fraction. Okay. Now you have the example showing that whether the these numbers are equivalent or not, whether these two fractions whatever are given are showing gives you equivalent answer or not.
तो ये दोनों फ्रैक्शन में आप कैसे समझ सकोगे these are equivalent fraction? Then what you need to do is you have a method where you have to take the cross multiplication of the numbers. तो यहाँ पे देखिए 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखिए ये दोनों 16 16 मतलब दोनों साइड आपके 16 16 मिल रहे हैं। दैट मीन्स दिस टू फ्रैक्शनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पर और दो एग्जाम्पल ले लिए, 2/4 एंड 4/7। ठीक है, 4/7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 2 × 7 ये क्रॉस में, और ये 4 × 4। okay, now this gives you 14, this gives you 16. That means these two fraction are not equivalent fraction because both the sides are giving you different answer. So this is how you can say whether the equivalent fractions, the fractions are equivalent or not. Now exercise 8.4, write two like fractions of the following. So you have been given with the numbers 3/7, you need to write the like fraction. तो इसका like fraction क्या लिख सकते हो आप, इस तरह से लिख सकते हो, देखिए 1/7, 2/7. So these are like fraction. Here also you can write 3/11, 5/11. Okay, so all the denominators should be same. Denominator same होना चाहिए. Numerator आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. Only you should not write 0. 0 आप मत लिखिए, बाकी हर एक नंबर आप लिख सकते हो and your denominator should be same. तो यहाँ पर भी आप देखिए 5/12 लिख सकते हो, 6/12 लिख सकते हो, 9/13 you can write, 11/13, 2/13, whatever you can. Then here 4/17, 11/17, but the denominator should be same. Now write the equivalent fraction represented by the following figures. 1/2, here 2/4. Okay, now here 1/5, here 2/5, 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. So here you can write 2/10. ठीक है. Now here 3/4, and then you have to count how many total parts are there. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Now see, here 16 total parts are there and 12 are colored. 12 parts are colored. So 12/16. Then here you have 3/5 and here 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. So 10 total parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colored part. So 6/10 is your equivalent fraction. Now find whether the following fractions are equivalent or not. So what you need to do, you have to cross multiply here. So let us do that. Now see what I have done. I have taken the two fractions, then what I did, cross multiply. 2 multiplied by 11 and 4 multiplied by 3. Now what I am getting, 2 × 11 is 22 and 4 × 3 is 12, which is not equal. So they are not equivalent fraction. So similarly you can go for the other questions. Okay, खाली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि whether the two products are same or not. Same रहा तो they are equivalent fraction, and if they are not same then that means these are not an equivalent fraction. Okay, so with this we complete off with exercise 8.1 and 8.4. We complete off with exercise 8.4. So next time we will go for addition and subtraction of fraction. Thank you.